Starting the great name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Today we will discuss chapter number 6, that is water chemistry. In the previous video, we discussed that what is environmental chemistry. Basically, environmental chemistry involves the study of the effects that chemical have on air, water, and soil, and how they impact environment, how they impact the environment and human health. Okay, today we will discuss the water chemistry, that is the science focused on understanding the chemical processes that affect the composition of natural waters and their suitability for the human uses. To understand the what is the water chemistry, first of all we will discuss that what is basically water. Water is the most abundant compound on the earth. It does not have odor and color and smell. And the chemical formula of water is H2O. A person can live no more than 4 to 5 days without water, and we rely on water for different purposes like indirect and direct purposes. And getting enough water for every day is important for your health, and we rely on the water for drinking, cooking, bathing, washing clothes, growing food, creation industries, and mining, as well as generation of electricity. And uh, occurrence of water is basically the major part of this chapter is occurrence of water. And a lot of MCQs come from this portion. Because basically water makes up your one third of Earth's surface, that is the ocean, rivers, glaciers, lakes, wells, and groundwater are the primary sources of the water. आपका जो पानी है वो वन थर्ड जो है वो ज़मीन का हिस्सा कवर कर रहा है. That make up your approximately 70% of the Earth's surface is covered with water, and while 30% is land cover with that is remaining जो है वो आपकी land है 30%. Okay, the majority of the water on the earth is 90% approximately, as shown in the picture, is 90% ocean का जो है वो 90% जो है वो आपका पानी जो है वो समंदर का होता है, and 3% is your fresh water. From the 3%, आपका जो 1% है water that is accessible for the human needs account for less than 1% of the total quantity of the planet earth. आपका 1% जो है वो यूटिलाइज होता है, humans जो है वो यूटिलाइज करते हैं आपका. और the issues that what fresh water is not distributed equally across the globe, जो है वो आपका जो है वो fresh water distributed नहीं है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, इस तरह की चीज़ें हैं. Okay. And what is the importance of water? In this slide, all the importance of water are discussed. That getting enough water every day is important for your health. Drinking water can prevent dehydration, and condition that cause unclear thinking result in the mood change. And a lot of other benefits of water are it lubricants the joint, forms saliva, book skin health, and your boots is that skin. And it also used for the washing and sanitation. It is used for the cooking, and it is used for growing food. And thermal plants use water to produce energy, and it is used in medical procedures. And it can prevent, but with the use of if you are using the clean water, then you can prevent the fatal disease like cholera, typhoid, all these things. Properties of water. Pure water is a transparent, as we discussed. It is colorless, odorless, and tasteless liquid possessing all the attributes that are listed here. Structure हो गया आपका, states of matters हो गई, density, universal surface tension, capillary reaction, polarity and dipole movement, and heat of vaporization. Basically, structure of your water is all of you know that कि हमारा जो पानी है, आपका जो पानी है, water is simple a molecule that consisting of your one oxygen and two different hydrogen atoms that are bounded to the single oxygen. Because of the higher electronegativity of the oxygen atom, the bonds are polar. Covalent bond यहाँ पर बनता है
एंड उसकी रिजल्टिंग इन द बैंड शेप, क्योंकि जो है आपका वो दैट इज़ योर more electropositive and that acquired due to more electronegativity, it acquire a partial negative charge on it, and while the hydrogen atoms each acquire a partial positive charge. That is the molecular structure of your water. एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर्स में जो है वो आपका जो पानी है वो तीनों ही मैटर में पाया जाता है। आपका जो पानी है वो तीनों ही स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। वाटर इज नोन टू एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। आपका क्लाउड, स्नो एंड रेन ऑल आर द मेड अप ऑफ द सम सेम फॉर्म ऑफ द वाटर। एंड आपका जो पानी है उसकी डेंसिटी की अगर बात की जाए, द डेंसिटी is maximum at 4 degree C, that is 1 gram per centimeter cube. ये MCQs भी आपका आ चुका है। Okay, water act as universal solvent. Water act as universal solvent. Why universal solvent? Because it is capable of dissolving more substance than any other liquid. This important this is important to every living thing on the earth. It means that whatever water goes either through the air, the ground, or through our bodies, it takes along valuable chemicals, minerals and nutrient in it. आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इस वजह से जो है वो बहुत सारी चीज़ों का कैपेबल है अपने अंदर समाने का। surface tension, surface tension is basically that force of gravity that आपके जो ऊपर कुछ surface tension जो है ना आपकी जो इफ़ेक्ट होता है सेंट्रल मॉलिक्यूल्स के ऊपर, और वो फ्रेम बना देते हैं और एक्सटर्नल फोर्स को जो है वो रेजिस्ट करते हैं, उसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। आपका सरफेस टेंशन जो है बेसिकली अलाउज ऑब्जेक्ट विद हाई डेंसिटी दैन द वाटर सच एज रेजर, वीड्स और इंसेक्ट्स और जो भी आपका है उनको जो है वो फ्लोट करने के लिए उसकी एबिलिटी होती है कि फ्लोट करता है। एक्सटर्नल, सिंपली आप ऐसे कह सकते हो कि लिक्विड दैट अलाउज to resist an external force due to cohesive nature of your molecules. Okay, capillary action of the water is basically nothing that moving up of your water molecules against the gravity. आपका जो कैपिलरी एक्शन है अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगर आपका पानी मूव कर रहा है तो हम उसको जो है वो कैपिलरी एक्शन कहते हैं। द फिनोमेना वेयर द लिक्विड थ्रू अ ट्यूब और सिलेंडर टेक्स प्लेस, आपका ऊपर जाता है पानी, इस वजह से एडिसिव और कोहेसिव फोर्सेस होती हैं जिस वजह से लिक्विड जो है इंटरेक्शन करके ऊपर नैरो ट्यूब्स में से नीचे से ऊपर जाता है, उसको जो है हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो ओके, पोलैरिटी एंड डायपोल मूवमेंट। पोलैरिटी जो है वो आपकी हमने पहले भी डिस्कस की कि पोलैरिटी और डायपोल जो है वो आपका dipole moment is measure the polarity of the chemical bond between two atom of the molecule। और आपका जो है डायपोल की अगर बात की जाए तो डायपोल में यहाँ पे जो नेट डायपोल है वाटर की वो 1.84 जो है वो डी है। तो if a molecule is completely symmetric then the dipole moment vectors on each molecule will cancel each other and that molecule जो है ना वो एक non polar हो जाएगा। लेकिन in the case of your water polarity dipole moment जो है वो cancel out नहीं होता क्योंकि ऐसे asymmetric shape है, इस वजह से जो है वो dipole moment उनका है। Okay, heat of vaporization, basically heat of vaporization is the amount of heat that is required thermodynamics में एंथैल्पी में अगर आप बात करें तो heat of vaporization जो है वो amount of energy require होती है। आप एक liquid को गैस में convert करने के लिए जितनी heat require होगी that is known as heat of vaporization। Okay, specific heat is your स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की अगर थर्मोडायनेमिक्स में बात की जाए तो आप द स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द हीट कैपेसिटी ऑफ अ सैंपल दैट बेसिकली द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सैंपल। आप जितनी हीट दे रहे हो और उसमें सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सी। आप 1 kg का जो है वो 1 डिग्री सी जो है वो टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हो तो उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट, और वाटर की स्पेसिफिक हीट है 4.184 जूल पर ग्राम। ओके, structure of water we already discussed that water is a simple molecule consisting of one oxygen atom bonded to two different atoms और इसमें जो है वो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है
और आपका जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है हमारा यहाँ पर। और extensive hydrogen bonding, water molecule are highly polarized molecule that are able to form an extensive network of hydrogen bonding. आपका क्या होता है कि